Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So far, viewers, we have learned to solve linear equations. In this lecture, we will apply linear equations. Question 1. If 3x minus 5y over 7x minus 4y is equal to 3 by 4, find the value of x over y. Can anybody give the answer? Three x minus 5y over 7x minus 4y is equal to 3 by 4. And we have to find the value. We will cross multiply. Okay. First step is you will cross multiply. And then you will keep x on the left hand side and y on the right hand side. Look at the steps. 3x minus 5y over 7x minus 4y is equal to 3 by 4. By cross multiplication, 4 is multiplied by this thing. 4 is dividing 3. Therefore, going to the right hand side, it will multiply 3x minus 5y. Just like that. 4 into 3x minus 5y. Similarly, this 7x minus 4y is dividing 3x minus 5y. Where we take it on the right hand side, it will be multiplied by 3, giving the answer 3 into 7x minus 4y. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay. What's the next step? Multiply this 4 by 3x, giving you answer 4 into 3x. And obviously this 4 will also be multiplied by this minus 5y, giving you answer minus 4 into 5y. Similarly, this 3 will be multiplied by 7x, giving answers 3 into 7x. And this 3 will be multiplying with minus 4y, giving you answer minus 3 into 4y. Finally, when this 4 is multiplied by 3, this will give you 12 and x remains as it is. Similarly, minus 4 into 5 gives you 20 and y remains as it is. On the right hand side, 3 into 7, 21, x remains as it is. And minus 3 into 4, minus 12, y remains as it is. Now, as I earlier told you, that keep x on the left hand side and keep y on the right hand side. Why we are doing so? Can anybody answer? Why we are keeping x on the left hand side and y on the right hand side? Please give the answer. Anybody? Hamna? Why we are taking x on the left hand side and y on the right hand side? So we can do the operation. No. Here, look at the answer which we. X or Y banana. Yes, we have to make x or y. That's why we are keeping x on the left hand side and keeping y on the right hand side. Next time we will divide both sides by y, and it will be easy for us to get x over y. Clear? Yes. Okay. Keeping 12x as it is on the left hand side and taking this 21x on the left hand side will give you minus 21x is equal to, once again, this minus 20y, keeping this minus 20y on the right hand side gives you 20y and minus 12y remains as it is. When you subtract 21 from 12, then this will be minus 9x. And on the right hand side, obviously 20 minus 12 will give you 8y. Now, what should be the next step? We have to remove minus 9 from here. And how can we remove minus 9 from here? No, we will take 9x to the other side. No. X should remain on the left hand side. We just want to remove 9 from the left hand side. How? Minus 9, not 9. We have to remove this minus 9 from here, keeping x here. How can we remove this minus 9 from the left hand side? 8y will be divided by minus 9. Obviously, minus 9 is multiplied with x.
Therefore, in order to remove -9 from here, we have to divide this expression by -9. And obviously, when we divide left hand side by -9, we also have to divide the right hand side by -9. Now, one thing more, we want to keep this y on the left hand side because we need x over y. That's why we are removing -9 from here. And we want y to be here, x over y. So therefore, we have to divide both sides by -9y. It's clear? Yes. No, sir, can you repeat, please? We have to divide both sides -9y. Look at the step. -9. Left hand side is -9x. It is divided by -9y. And right hand side is 8y. It is also divided by -9y. Now look at the result. This -9 will be cancelled out with this -9. And this y will be cancelled out with this y, giving you the answer x over y. -9 will be cancelled out, giving you x over y. And this y will be cancelled out with this y, giving you answer. Please wait. Cancelling y by this y, and we will have answer -8 over 9. That's the required value which he asked to find x or y. Now can you can put the answer question. Yes, Qasim? Sir, where is the -9y coming from? We basically on when we perform operation on an equation of the same operation on the both sides, it does not affect the equation. Look at here, we had an equation -9x is equal to 8y. And as you know, this equation has two sides. This is left hand side -9 and this is right hand side. When we perform same operation on the both sides of the equation, then it does not affect the equation. And now we are performing the same operation, -9y, -9. We are basically performing the operation that we are dividing both sides by -9y. Is it clear now, Qasim? जब कोई इक्वेशन दी होती है तो उसकी दोनों साइड्स के ऊपर सेम ऑपरेशन करने से हमें वो इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता. तो हमने सेम ऑपरेशन किया है कि उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को -9y से डिवाइड किया है. You can put the question why we did so, why we divide both sides by -9y. We could also divide by 3 both sides. If equation does not change, performing the same operation on both sides, then it could be divided by 3. Hamna, why we divide it by -9y? Because there is 8y on the left side, I mean right side. Yes. ज़हेब, आप बताएं, हमने -9y से ही क्यों डिवाइड किया है, किसी और से क्यों नहीं कर दिया? ज़हेब, आर यू देयर? ज़हेब, ज़हेब, Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को हमने -9y से ही डिवाइड क्यों किया है, किसी और से क्यों नहीं डिवाइड किया? आप थे क्लास में? अब मैं जब समझा रहा था आप नहीं थे क्लास में. ज़ेब, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. तो बताएं ना, -9y से ही क्यों डिवाइड किया है दोनों साइड्स को? भाई क्लियर सी बात है, आपने समझा ही नहीं, पूरा बात ही नहीं सुनी. यहां से हमने -9 को रिमूव करना है. -9 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे? -9 से. और यहां से हमने y रिमूव करना है. अब सुने, यहां से हमने y रिमूव करना है, तो
तो y रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स को किस पे डिवाइड करेंगे? y पे। तो हम दो ऑपरेशन सेपरेट करने के बजाय एक ही ऑपरेशन कर लेते हैं ना, क्योंकि बारी बारी हमें अगर करना है, पहले हम -9 से डिवाइड करें, फिर हम y से डिवाइड करें, तो क्यों ना -9y से एक ही दफा डिवाइड कर लें इसको। उससे क्या होगा, उससे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया ना। -9y से डिवाइड करने से -9 और -9 कैंसिल आउट हो गया, ये y और ये y कैंसिल आउट हो गया, और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमें x और y लेके आना था ना, तो x और y बन गया हमारा। अब राइट साइड पे जो भी आंसर आया वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज -8/9। Yes. मुझे लग रहा आज आपको क्लियर नहीं हो रही बात, हम ना क्लियर होगी बात। Yes, sir. कासिम, Yes, sir. पता चल गया कि -9y से क्यों डिवाइड किया, Yes, sir. और ये भी पता चल गया कि -9y से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a is equal to y square minus xz over 5, find the value of a when x is equal to y is equal to -1, z is equal to 3. Now, you will answer one by one. First of all, Qasim, give me the answer. Have you followed the question? A is given y square minus xz over 5. Find the value of a. We have to find the value of a when x is equal to y is equal to -1 and z is equal to -3. How can we find? Okay, let the answer Zohaib. Zohaib, Yes, sir. please tell me how can we find the value of a? What we have to do? Sir, x and y की वैल्यू दी हुई है तो इसमें पुट कर देंगे हम। X, y and z की वैल्यूज Yes. हम ना, Yes. Yes, sir. is he saying correct? Yes. Okay. Qasim, we just have to put the values of x, y, z on the right hand side in order to get the value of a. Look at here, this is a is equal to y square minus xz over 5. And now just put x is equal to 2, y is equal to -1, z is equal to -3, because these are the values of x, y, z. These are the given values of x, y, z. Just you have to put here x is equal to 2, y is equal to -1, and z is equal to 5. Look the step. In place of y, we have put y -1, and this square remains as it is, -1 square, because the value of y is equal to -1. That's why we have replaced y by -1. And then the value of x is 2. Therefore, x is replaced by 2. And minus sign remains as it is. The value of z is 3. Look at here. And this z is replaced by -3. And 5 remains as it is. Understand? Yes, sir. Zohaib. Yes. Okay. Simplify this. What is the -1 square? -1 square. When you take the square of -1, this will become 1. And when you multiply this -2 by -3, this will give you +6. Plus. -1 square is +1, and -2 into -3 gives you 6. 1 plus 6 over 5. And this gives you 7 over 5. When you divide 7 by 5, 1 times 1 whole 2 by 5. This is the answer. 5 ones are 5 and 2 is a remainder. Therefore, 1 whole, 2 remainder, and 5 is the divisor. 1 whole 2 over 5. This is the answer. Any questions, please? No. If no step is clear, you can put the question. Sir, I have a question. Yes.
Sir, how did we make -1 power 2 -2 -3 by 5 into 1 plus 6 by 5? 1 plus 6 by 5, this one. Look at minus Yes. minus 1 square means you are multiplying -1 with -1. When two negative signs are multiplied, that the resultant sign is positive. Okay. That's why this becomes +1. Similarly, when -2 is multiplied with -3, multiplying these two negative signs will make it positive. And as you know, 2 into 3 will be 6. Don't you know? Yes, sir. Okay, 2 into 3 is equal to 6. That's why here 1 plus 6, we have 1 plus 6. And 1 plus 6 is 7. Yes, sir. Okay, Clear? thank you, sir. Okay, welcome. Next question. If S is equal to 4 pi r square, find the value of S when r is equal to 10 whole 1 over 2. It's so simple. We just have to put here, we just have to replace r by 10 whole 1 by 2. And in order to put the value of r 10 whole 1 by 2, we will change it into another form. That will be 20 plus 1, 21 over 2. Yes. इस तरह तो पुट नहीं कर सकेंगे ना 10 होल 1 by 2. इसकी तो वैल्यू दूसरी फॉर्म में निकाल, Yes, sir. हाँ उसकी वैल्यू आएगी 21 over 2, वो पुट कर देंगे हम. पाई की वैल्यू उसने दी हुई है, टेक पाई 22 over 7. तो just concentrate on the first part of the question. S is equal to 4 pi r square, label it as equation 1. Put pi is equal to 22 by 7 because it is given. Keep in mind, pi is not equal to 22 by 7. It is basically approximately equal to 22 by 7, and it is always given for the simplification. Next, r is equal to 10 whole 1 by 2 gives you 21 over 2. Now put these values in equation number 1. S is equal to 4 pi r square. Now look at here, 4 remains as it is, and the value of pi is replaced by 22 over 7, and r is replaced by 21 over 2, and square remains as it is. Square remains as it is. Next, simplifying it, taking square of 21, keep 4 as it is, keep 22 over 7 as it is, and take 21 square. 21 square is 441, and 2 square is 4. Now you can use the calculator. 22 into in fact this 4 will be cancelled out. This 4 is cancelled out with this 4, and you have 22 into 441 over 7, and calculating its answer, you get 1386, 1386. Any problem in this question or in any step? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. Second part. Second part. What was the second part? Look at the question. The positive value of r when S is equal to 616. In first part, we have to find the value of S, and r was given to you. In second part, we have to find the value of S when we have to find the value of r when S is given. Once again, repeating those steps, put pi is equal to 22 by 7 and S is equal to 616. Here was S, and S is replaced by 616. Here was 4, that remains as it is. Here was pi, that is replaced by 22 by 7. And here was r square, and that remains as it is. Okay, we can write it as r square and keep these terms on the right hand side. When this 7 goes on the left hand side, this will be multiplied with 616, giving you 616 into 7. And when this 4 and 22 goes on the left hand side, this will divide 616. And as here 4 into 22 is dividing 616. R square is equal to 4312 over 88, and R square is equal to 49 using calculator. And when you take square roots on both sides, you will have
two values of r, +7 and -7. But in the question, it is asked to find the positive value of r. Therefore, we will ignore -7 at this step, and the required value of r will be 7. Any questions? Please, if you find any difficulty in any step, please put your question. सर 49 से 7 कैसे बन गया? बेटा स्क्वायर रूट लो ना, स्क्वायर रूट। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 7। स्क्वायर रूट वाला चैप्टर नहीं किया था जोहेब? किया हुआ है। हाँ, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 इंटू 7 क्या होता है? 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यस सर। 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 49 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 रेज़ पावर 2। हम ना 49 को लिखा, 49 को लिखा जाता है, सर लिख सकते हैं। तो फिर वो 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। आप अपने कैलकुलेटर पे देखें ना, 49 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 7 आएगा, बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 होता है। जी क्लियर? यस। क्वेश्चन 4। अब जरा आप लोगों ने सबने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना भी है, और फिर आपने मुझे इसके पहले बताना है कि क्वेश्चन है क्या और करना क्या। ओके सर। The formula for finding the area A of a triangle is given by A is equal to 1/2 BH, where B and H represent the base and the height of the triangle respectively. वो ये कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो? ठीक है, याद है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। अच्छा, मैं अभी बनाता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर यहाँ डायग्राम की ऑप्शन मेरे पास हुई तो नहीं लग रही कि यहाँ पे उसकी कोई ऑप्शन है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है कि ये अब स्ट्रेट लाइन और ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये बेस है, ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर या हाइट और ये हाइपोटेन्यूज। पता है ना भाई राइट एंगल ट्राइंगल का? यस यस सर। अब तो उसने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला दे दिया। क्या दिया? 1/2 multiplied by base multiplied by height. Yes, this is the formula. This is given, and always we use this formula for finding the area of the right angle triangle. ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अभी तक तो उसने कुछ नहीं आपसे कहा, अभी तो सिर्फ उसने कहा कि ये फॉर्मूला है। अब कहता है क्या फाइंड क्या करना है? If B is equal to 20 centimeter and H is equal to 45 centimeter, find the area of the triangle. Is it difficult? No. No. You just have to put, you just have to replace B by 20 and H by 45, and you will get the answer. Okay, first concentrate on the first part of the question. Solution: area is equal to 1/2 BH. Leibniz equation 1, and put B is equal to 20 as B is given 20 base, and H is equal to 45 centimeter. Put these values in the equation 1. Area A is equal to 1/2. B is replaced by 20 centimeter and H is replaced by 45 centimeter. 20 into 45, 900, and centimeter into centimeter will give you centimeter square. Unit of area will be in square units. Then dividing 900 by 2, you will have 450 centimeter square. Is it clear? Yes. Yes, Yes. sir. Okay. What was the second part? Zohaib, please tell me.
Sir, can I tell? Just let Zuhaib tell. Zuhaib, are you there? Yes, sir. Okay, hurry up. Qasim is in class 6. Do you know? And Yes. he is telling us what we have to Yes, do. Zohaib, what we have to do if A is equal to 30 centimeter square and B is equal to 10 centimeter, find the height of the triangle. How can we proceed? You are not concentrating in the class. Okay, Qasim, you tell. Yes, sir. Qasim, you tell. Hamna. Sir, if A is equal to 30 centimeter square and B is equal to 10 centimeter, we have to find सर the ए height of और the बी की triangle. वैल्यू पुट कर देंगे उस पे. तो यही को ना, और क्या, कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एच की आ जाएगी. हमना इज सेइंग सम सेम थिंग. Okay, put A is equal to 30 centimeter square and B is equal to 10 centimeter in one. This A is replaced by 30 centimeter square and 1 by 2 remains as it is. B is replaced by 10 centimeter and H obviously remains as it is because we have to find the value of H. This will give you H is equal to, if we take this 2 on the left hand side, this will be multiplied with, or you can cancel here. 2 cancels 10, giving you answer 5. And you are taking 5 on the left hand side, this will divide 30. H is equal to 30 centimeter square over 5 centimeter. Do you follow this step? 30 centimeter square remains as it is. You are simplifying this 2 and 10, giving answer 5. And when you divide, when you take this 5 centimeter on the left hand side, this will divide 30 centimeter square as I did here. 30 centimeter square over 5 centimeter. Do you follow the step? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What's the next Yes. step? What's the next step? This square will be cancelled with the 1 centimeter on the denominator, and this 5 will cancel 36 times, and height of H will be height 6 centimeter. 6 centimeter, because here we have 6 centimeter remains as it is. Square is cancelled with this centimeter and giving you answer 6. H is equal to 6 centimeter. And we can highlight it. You can also highlight in your homework and in questions examination. Okay, question 5. Now, these are very interesting questions. Here, basically, we are going to apply the linear equations. Find a formula for each of the following. First part, product P of 3 numbers X, Y, and Z. Question समझ आ गया आपको? 3 numbers हैं X, Y, Z. उनकी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखिए. X, Y, Z की प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, मुझे ये बताएं 2 और 3 की प्रोडक्ट क्या होगी? कैसे करें? 6. तो वो आई है 2 into 3. We multiply. 2 Yes. multiply by 3. Okay, same thing you have to do here. The formula is product. Product stands for the product of X, Y, Z. And how can we get the product of X, Y, Z? We are just multiplying X, Y, Z. Do you follow? Product P. Yes, yes. Zohaib इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें. प्रोडक्ट P of 3 numbers. 3 numbers की प्रोडक्ट का फार्मूला लिखें. बहुत आसान है. तीनों नंबर की प्रोडक्ट लिख के प्रोडक्ट आनी कैसे है, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना जैसे यहाँ पे कर दिया, और वो P के इक्वल लिख देना. Yes, sir. ओके, बी पार्ट. सम S. सम जो है वो S से डिनोट करना है. ऑफ द स्क्वायर ऑफ P एंड द क्यूब ऑफ Q. जी बताएं, P का स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर. Q का क्यूब क्या होगा? Q क्यूब. उनका सम क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q क्यूब. और आंसर क्या आ जाएगा?
S इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। नहीं समझ आई? क्या कह रहा था? सम S ऑफ द स्क्वायर ऑफ P, P के स्क्वायर का यस सर। एंड द क्यूब ऑफ Q, और Q के क्यूब का सम। यस तो यही आएगा ना फिर, P स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। यस सर। हम ना यस सर। next question, C part. Average A of four numbers M, N, P, and Q. Now, can anybody tell me how can we find the average of the numbers? How can we find average? If Zuhaib, you get 10 marks in first test and 4 marks in second test, what will be your average marks? सर 14 over 2. 14 over 2 एग्जैक्टली। क्या किया? पहले टेस्ट में 10 थे और दूसरे टेस्ट में 4 थे, उनको ऐड किया और चूंकि 2 टेस्ट हुए हैं तो 2 पे डिवाइड कर दिया। अब सेम थिंग करनी है। यहाँ नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी तरह जो सेम पैटर्न। सर 4/4। नहीं 4/4 सर नहीं 4/4. और नहीं बेटा 4/4 कैसे? ये M plus N plus P plus Q divided by 4. यस, 4/4 कैसे आएगा? पहले अब तुम्हारे पास मार्क्स 10 थे और उसके बाद 4 थे, तो तुमने 10 + 4 किया ना, 2/2 तो नहीं ना किया, 10 + 4 किया ना, और डिवाइडेड बाय 2 किया। अब इसी तरह आपने नंबर्स को पहले ऐड करना है और फिर उनकी जो तादाद है उस पर डिवाइड करना। तो हम ना गिव द करेक्ट आंसर, just add M, N, P and Q and then divide by total strength, that is 4. So what will be the formula? M A is equal to average is equal to M plus N plus P plus Q or 4. Is it clear? Yes sir. Okay. D part. Time T in minutes for a train journey of A hours and B minutes. अब ये क्वेश्चन समझ लें पहले। आपने टी टाइम मालूम करना है एक ट्रेन की जर्नी का, ए आवर्स हैं और बी मिनट्स हैं। ये बड़ा मुश्किल इस तरह से क्वेश्चन है कि 2 डिफरेंट यूनिट्स वी हैव, वन इज आवर्स एंड अदर इज मिनट्स, और आंसर किस में देना है? हमने आंसर देना है मिनट्स में। ये देखें जरा, टाइम टी का फॉर्मूला मालूम करना है और आंसर शुड बी इन मिनट्स, बट द स्टेटमेंट में आपके पास 2 यूनिट्स हैं, आवर्स और मिनट्स। तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं कि 1 घंटा और 30 मिनट्स के मिनट्स बनाए तो कितने बनेंगे टोटल मिनट्स? 90। कैसे किया आपने? 1 आवर को एवरीबडी नोज देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। Sir, can I explain? यस। Because 1 hour has 60 minutes and Yeah. 30 minutes, and so 60 plus 30 is equal to 90. Exactly. Now here we have A hours. First of all, we have to convert it into minutes. Now look at how can we convert. 1 hour is 60 minutes. A hour 3 hours will be 60 into 3. ऐसे ही किया ना हमने। 3 अगर A 1 hour 60 minutes का तो 3 hours करने होंगे तो क्या करेंगे? 60 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 से। 3 से। और अगर A hours करने होंगे तो फिर क्या होगा? A hours 60 into A. 60 multiplied by A. Yes. Look at 1 hour is 60 minutes. That's why 3 hours, when we have to get 3 hours, we have to multiply 60 into 3. And if we have to find A hours, then we have to multiply 60 into A, and this will give you 60 into A minutes. Why we are doing so? Because we have 2 units, hours and minutes, and we have to give the answer in minutes. Therefore, we have to convert A hours into minutes. What is that? 60 A minutes. Yes sir. Now just we have to add B minutes. As you added in 60 minutes in 30 and 30 minutes. What's the answer here? Time will be 60 A. 60. Yes, this is the correct answer. हम ना
Did you follow? Yes, sir. Okay, okay. Question 6. Find a formula for the sum s of any three consecutive odd numbers. Now only 3 minutes are left. Time is very short and we have to wind up this lecture. Do you know the odd numbers quickly? Yes. Okay. Yes, sir. Look at some consecutive odd numbers. 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc. Now, what's the difference between any two consecutive numbers? When you subtract 9 from 11, you get 2. When you subtract 11 from 13, you get 2. This shows the difference of any two consecutive odd number is 2. Do you follow? 9 के बाद Yes, sir. 9 के Yes, बाद sir. 9 के बाद एक नंबर छोड़ के 11 आना है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के 11 आना है, तो कंजेक्टिव ऑड नंबर्स का डिफरेंस 2 का है. तो अगर मैं एक ऑड नंबर n सपोज कर लूं तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? यहां मैंने ये जो बात आपको समझाई है थोड़े से ऑड नंबर्स लेके कि कंजेक्टिव ऑड नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज 2 होता है, वही यहाँ पे लिखा है. सिंस द डिफरेंस बिटवीन कंजेक्टिव ऑड नंबर इज 2, so the required 3 consecutive odd numbers may be, जो Sir, हमने n+2 होगा. yes शाबाश. And what will be the next one? Sir, n+4 Yes, and n+6. बस we just need three numbers. हम ना, do you follow? n+2 and n+4. Yes. If I assume first odd number n, then the next consecutive odd number will be n+2 and the next consecutive odd number will be n+4 because odd numbers have difference of 2. Now what's the question? Sum. We have to find the formula of sum of these odd numbers. So that's so simple. S will be equal to n plus n+2 plus n+4. Now n plus n will give you 3n and this 2 plus 4 give you 6. This will give you the required formula. Next, look at this second part. I have to try to solve this part because only 1 minute is left. This was the first part. Solution of the first part, 3n plus 1. Hence, find the value of s when the greatest odd number is 101. Greatest odd number. मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने जो 3 ऑड नंबर सपोज किए थे इनमें ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? 101. और बेटा नहीं, इधर इनमें से जो ये अज्यूम क्यों है? n+4. n+4 ऑब्वियसली n+4 है और उसने क्या दिया है? 101. उसने 101. तो फिर इसका मतलब है n+4 किसके बराबर होगा? 101 101. समझ आ गई है? हमने जो अज्यूम किया था ग्रेटेस्ट ऑड नंबर दैट वाज n+4 and among these. Okay, once again turning to the next part, I was asking you which one is the greatest odd number among these three numbers, and you told me n+4. yes, you told me n+4. And in the second part of the question, it is given to us that 101 is the greatest odd number among these numbers. So therefore, n+4 should be equal to 101. Okay. Now from here we can find the value of n, which is n is equal to 101 minus 4 and n is equal to 93. 93, yes. Okay, what we have to do, thus we have to find the sum s, and we have already calculated the formula for s. S is equal to 3n plus 6. Sir, 97 बनता है. 101 minus 4. 97 बनता है. Okay, let me correct it. Okay, n is equal to 101 minus 4 will give you n is equal to 97, and then put this in the known formula which we just calculated. S is equal to 3n plus 6 and replace this n by 97. This will give you answer 3 into 97 plus 6,
291 plus 6 191. and 297 is the correct answer. This completes the question. Please, any questions? No, sir. Okay. Question 7. Now look at the this is somehow difficult question, and please try to understand what he is asking. First of all, look the information given in the question. Find a formula for the total cost $T of C pens at $D each and E pencils at F cents each. आपको क्वेश्चन समझ आया? उसने कहा जी टोटल कॉस्ट मालूम करनी है डॉलर्स में. ये जरा गौर कीजिएगा, ये सिंबल डॉलर्स का है कि किसकी कॉस्ट मालूम करनी है टोटल. सी पेन्स, जबकि एक पेन की प्राइस उसने दी हुई है $, और सी पेन्स उनकी आपने कॉस्ट मालूम करनी है. एक और भी इशू है साथ, ई पेंसिल्स की भी कॉस्ट मालूम करनी है. ई मीन नंबर. अभी उसने ना सी और ई बता के आपको कंफ्यूज कर दिया. अगर वो 10 पेन्स कहता तो बड़ी आसानी से आप 10 पेन्स की प्राइस फाइंड कर लेते, लेकिन उसने सी कह दिया तो अब वो कंफ्यूज कर दिया आपको. वो फार्मूला बेसिकली चाह रहा है ना, एक जनरल फार्मूला स्टैब्लिश करना चाह रहा है, लेकिन जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक पेन की प्राइस जो है वो $, है, और एक पेंसिल की प्राइस जो है वो F सेंट्स है. तो अब ये फिर दो डिफरेंट यूनिट्स आ गई. As in the previous question, we faced two different units, hours and minutes. And we knew that there are 60 minutes in 1 hour. Likewise, here we once again face two units, dollar and cents. Can anybody tell me which one is the bigger unit, dollar or cent? Dollar. Dollar. How many cents are in $1? 100. Okay, you're right. There are 100 cents in $1. Now, question is that C pens, the price of one pen, each mean one pen. Price of one pen is $D, and price of one pencil is F cents. We have to find the total cost in dollars. Can anybody suggest me the solution? How can we proceed? जी, हम ना आपसे स्टार्ट करते हैं. आपका मैथ बहुत अच्छा है. हम ना क्वेश्चन समझ आया? पहले सब लोग No, आप, sir. हाँ, प्रॉब्लम यही है कि भाई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तीनों को. ज़ेहब आपको समझ आया? No, sir. कासिम को आ गया होगा. फिर क्यों कासिम? कासिम है क्लास में? कासिम, आर यू देयर? ओके ओके. अच्छा देखें, क्वेश्चन बड़े गौर से देखें. वो मैं ना इसको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ. ये जो, क्योंकि क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा तो ही आगे बात बनेगी ना, वैसे तो नहीं बनेगी, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. उसने जो डाटा दिया हुआ है ना, वो उसको थोड़ा तवज्जो करें उसके ऊपर. वो कहता है कॉस्ट ऑफ सी पेन्स फाइंड करें. अब सी को फर्ज कर लें आप 10 है, आपको समझाने के लिए. क्या कह रहा है? फर्ज करें कि 10 पेन्स की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि एक पेन की कॉस्ट, ये देखें ना क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ सी पेन्स एट $D ईच. अब ये उसका मतलब कहने का ये है, उसका मीनिंग ये है कि एक पेन की प्राइस $D है. अच्छा, मैं आपको समझाता हूं. अब अगर एक पेन की प्राइस $2 हो तो 10 पेन्स की क्या प्राइस होगी? $20. $20. कैसे पता किया? 10 into 2. 10 into 2 करके. तो यहाँ यही 10 into 2. यहाँ यही सिचुएशन है. गौर करें, एक पेन की प्राइस है $D और सी पेन्स की प्राइस फाइंड करनी है. क्या होगी?
ये तो जवाब D देगा ना। into C. एग्जैक्टली $60 भी आएगा, $CD। क्लियर होगी बात सबको? जोहेब, Yes. Yes, Yes. sir. जोहेब, Yes, जोहेब, sir. जोहेब तुम्हारी आवाज लेट आती है, क्या इशू है? देखें अभी आपने जल्दी से मुझे बताया था कि एक पेन की प्राइस $2 है, तो 10 पेन्स की प्राइस मालूम करने के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाई 2/10। Yes. तो सेम सिचुएशन इज हियर। Price of one pen is $D, and you are looking the price of C pens. Just multiply C by $D, and you will get the $CD. Next, Yes, sir. same question. Look at, you have to work out for the price of E pencils. Sir, can I tell? Please wait. You are looking for the price of E pencils, while price of one pencil is given F cents. Now you can answer, Sir, Qasim. E into F. Answer, Sir, E into F cents. yes, E into F cents. Now हमना, you got the point or not? Yes, sir, I got it. Okay. अब ये है जो हमने किया ना, ये हमने सेपरेट प्राइसेस मालूम कर ली हैं। कितने सी पेन्स की सेपरेट प्राइस मालूम कर ली है, वो क्या आ गई है $CD। और ई पेंसिल्स की सेपरेट प्राइस मालूम कर ली है, वो क्या आ गई है EF सेंट्स। लेकिन हमने करना क्या है, उन दोनों को ऐड करना है। टोटल प्राइस चाहता है ना, वो देखें जरा, ये समझ आ रही है आपको? टोटल कॉस्ट, Yes, sir. टोटल कॉस्ट वो चाह रहा Yes, है। sir. तो जो हमने सेपरेट प्राइसेस मालूम की हैं ये वाली, इनको ऐड कर देंगे। लेकिन एक मसला और भी है, एक मसला और ये है कि जो प्राइस रिक्वायर्ड है वो डॉलर्स में है। तो अब ये सेंट्स वाला मसला जो है, इसको डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकती? जी बताएं, शाबाश। आपने मुझे ये बता दिया हुआ है कि 100 सेंट्स होते हैं $1 में। तो जब हम सेंट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करें? अच्छा चले, मैं एक और बात करता हूँ। $1 जो है उसके सेंट्स कितने होंगे? 100 cent. कैसे मालूम Yes, किया? sir, 100. आपने डॉलर से सेंट्स बनाने हो तो क्या करते हैं, डॉलर को मल्टीप्लाई करते हैं जितने 100 से। मसलन $2 है तो Yes, sir. $2 है तो 200 सेंट्स बने। 200 cent. कैसे? 2 into 100। Yes, sir. डॉलर बड़ी यूनिट है और सेंट स्मॉलर यूनिट है। तो जब आपने बड़ी यूनिट से स्मॉलर में जाना हो तो क्या करते हैं? So, sir, we will divide. नो नो, बड़ी से स्मॉलर में जाना हो, डॉलर से सेंट में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेंट ज्यादा होंगे ना, आप गौर करें ना, डॉलर आपके पास कम होंगे और सेंट ज्यादा होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि $1 के 100 सेंट्स है। Yes, sir. आप डॉलर बड़ा यूनिट है, उससे छोटी यूनिट में जा रहे हैं और छोटी यूनिट आपको ज्यादा मिलेगी। तो ज्यादा कैसे मिल सकती है? मल्टीप्लाई करने से। By multiplying. Excuse तो me. यस यस, Sir, to convert cents into dollars, we will divide. oh yes, you are right, but I am just explaining how can you convert dollars into cents. When you are converting dollar into cents, you have to multiply because you are going from a larger unit to the smaller unit. Now here we need to convert cents into dollars. Then obviously you will divide. Do you follow, Hamna? Yes, sir. Zohaib, Yes, sir. in order to convert cents to dollars, we have to divide it by 100. Okay, now after explaining all question, I just show you how can you well present this solution. Look at, write the data, cost of each pen. What is that? $D. It is given, and now you are writing this data in order, in an elegant way. Cost of each pen is $D, and you
wrote this from the question. Cost of C pens, as you told me, we will multiply C by $D. C Yes, sir. into C into, as you did 2 into, as you multiply 2 by 10, you get C into $D. This will give you $CD. This is the cost of C pens. Now again repeat the steps for the pencil. Cost of each pencil, it is given F cents. Cost of E pencils, obviously E multiplied by F cents, as you told me, and this will be EF cents. EF. Now we have to make this cost into, we have to convert this cost from cents to dollars. And as Qasim told us, we will divide EF by 100. Right. And look at, when I divide EF by 100, I use the symbol dollar. Keep the difference in mind. Here, unit was written cents. When I converted it into 100, I immediately write the symbol dollar. Do you follow this step? Yes, sir. Zahib? Yes, sir. Okay. Now this shows that cents have been converted into dollars. This is cost of e-pencils in dollars. Now it's very simple. Total cost will be adding these two. Cost of C pens, which was $CD, plus cost of E pencils, which was $EF over 100. ये हमने सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी कर ली है. वी से इट मैथमेटिकल मॉडलिंग. अब आप देखें. ओके, प्लीज लिसन. इस को मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिखने के लिए हम सिंपली लिखेंगे P is equal to CD plus EF over 100. T is equal to CD plus EF over 100. We will not write the unit. This is our required formula. Understand? Yes, sir. Now this is your homework, and I will send you more questions for homework, or you can also solve the questions as given in your school homework. You can also solve those questions. Okay. What's this? This is this question you have to solve. If E is equal to minus 145 C over 4 minus C, and D is equal to F plus 5 over 50, where E is 150 and D is equal to 3, find the value of T. क्या करना है भाई? आपने E की वैल्यू 150 यहाँ पुट करनी है. ठीक है, ये वाली E की वैल्यू 150 यहाँ पुट करनी है. उसको सिंप्लीफाई करेंगे, C की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू 3 जो है वो यहाँ पुट करनी है. उसको सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी. यस सर. और सारी की सारी जो 4 वैल्यूज आ गई हैं वो यहाँ पुट करके आपको पास T आ जाएगा. समझ आ गई सबको क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Can you explain again? Please put this value of E 150 in this equation. When you put E is equal to 150 here, after simplification, you will be able to get the value of C. And then put D is equal to 3 in this equation. D is equal to 3, put here. And after simplification, you will be able to find the value of F. Now you have 4 values. E and D are already given, and you just found values of E and F. Now put all these 4 values in this formula. You will get the answer of T. Is it clear? Yes, sir. Hamna? Yes, sir. Okay, please solve all of you immediately and send me the answer. Okay, sir. Okay. Okay, Sir. okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.